चिड़ियों की चहक, फूलों की महक, पत्तों की खनक माशाअल्लाह, तारों की चमक, बिजली की कड़क, पुरनूर फलक सुबहान अल्लाह। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह या रब 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 या रब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू कंजुल ईमान स्कूल टीवी। आओ बच्चों, हम आज का सबक पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ें। Dear children, today we are going to do the planner of day 6. We are going to start with English page number 8 and 10. Respected parents and teachers, as you know, we had done page number 8 reading before. So learn the page on the same pattern. Review and practice. It is a cat. Dear children, read aloud me, read aloud again and again. It is a cat. It is a cat. It is a cat. It is a fat hen. Fa at fat, ha and hen. It is a fat hen. It is a fat hen. Fa at fat, ha and hen. It is a fat hen. It is a fat hen. Fa at fat, ha and hen. It is a fat hen. It is a red shed. Shed. Dear children, respected parents, sh produces the sound of sh at shed. It is a red shed. Shed. Dear children, respected parents, sh produces the sound of sh at shed. It is a red shed. At shed. Dear children, respected parents, sh produces the sound of sh at shed. I met a man. I met a man. I met a man. Six men met in a shed. 6 men met in a shed. Six men met in a shed. 6 men met in a shed. Six men met in a shed. 6 men met in a shed. 6 rats dig is this pit. Dear children, th produces the sound of the. The is this pit. 6 rats dig this pit. 6 rats dig is this pit. Dear children, th produces the sound of the. The is this pit. 6 rats dig this pit. 6 cats run.
Gnat sits on his mat. It is a big cat. This is a bed. Sam is wet. Wet. Sam got his bed. A cat has a red hat. 6 red snakes. 6 red snakes. Pat has a saw. Nan got a big fan. General knowledge. How many provinces are there in Pakistan? पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 4. Dear children, read aloud with me. How many provinces are there in Pakistan? 4. How many provinces are there in Pakistan? पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 4. Dear children, read aloud with me. How many provinces are there in Pakistan? 4. Name the 4 provinces of Pakistan. Name the 4 provinces of Pakistan. पाकिस्तान के 4 सूबों का नाम बताएं. पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान. Read aloud with me. पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान. Name the 4 provinces of Pakistan. Name the 4 provinces of Pakistan. पाकिस्तान के 4 सूबों का नाम बताएं. पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान. Read aloud with me. पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान. Now let's start conversation. What is your father's name? What is your father's name? My father's name is Ali. What is your father's name? अपने पापा का नाम बताएं. My father's name is Ali. What is your father's name? What is your father's name? My father's name is Ali. What is your father's name? अपने पापा का नाम बताएं. My father's name is Ali. What is your mother's name? My mother's name is Amna. What is your mother's name? My mother's name is Amna. मम्मा का नाम बताना अपने. What is your mother's name? My mother's name is Amna. What is your mother's name? My mother's name is Amna. मम्मा का नाम बताना अपने. Now let's start with poem. Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. Divian. Reading of page number 5, question number 1 and 2 of GK, question number 1 and 2 of conversation and the 2 lines of the poems. Dear children, respected parents and respected teachers, आपने पेज नंबर 5 की जनरल नॉलेज और कन्वर्सेशन के दोनों क्वेश्चंस की और पोएम की दोनों लाइंस की रीडिंग दोबारा से रिवीजन करवानी है. टीचर्स नोट. Teach it well today with the phonics and listen to the children with phonics by tomorrow. Make sure that all the students have learnt all the questions today with loud reading and then listen tomorrow positively. Respected teachers, आज phonics के साथ बच्चों को पढ़ाएं और कल दोबारा से सुने. इस बात का यकीन कर लें कि बच्चों ने तमाम क्वेश्चन आंसर ऊंची आवाज़ में याद कर ली हैं और कल इसी तरह आपने दोबारा सुनना है. थैंक यू. Dear children, let's start written work now. We will make words with F for
G, Ga, H, Ha, I, E, J, J, Ja. So let's start. Watch carefully and learn how to write. F for frog. F, Ra, Og, frog. Fa, rog, frog. Ga, an, gun. Ha, an, hen. Igloo, igloo. Jeep, ja, eep, jeep. Dear children, learn all the words from F to J. Today we will learn vowels. In ABC there are 26 letters. A to Z there are 26 letters. In these 26 letters 5 are vowels. A, E, I, O, U. Read aloud with me. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. बच्चों ABC के टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिनमें से 5 कौन से हैं? वोवल्स। वो वोवल्स कौन से हैं? A, E, I, O, U। और बाकी जो 26 हैं वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। अब सर्कल द वोवल्स एंड कलर द कॉन्सोनेंट्स। हम सर्कल करेंगे किस में? वोवल्स में। वोवल यहाँ पे कौन सा है? ए। इसको सर्कल कर देंगे। नाउ ई। ई को सर्कल कर दिया। आई, ओ, एंड यू। अब हम कॉन्सोनेंट्स में कलर करेंगे। ये देखो बच्चों, इसमें हम कलर करेंगे। कुछ इसी तरह आपने ये सारे कॉन्सोनेंट्स के अंदर कलर करने हैं, ठीक है? Dear parents, listen page number 8 and learn it again. Also, dear children, also do the homework on the same pattern. Thank you. चिड़ियों की चहक, फूलों की महक, पत्तों की खनक, माशाअल्लाह की चमक, बिजली की कड़क, पुरनूर फलक, सुबहान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।